Hello students, a very good morning to all. This is me Anuj Kumar and I welcome to all in this channel that is Garisala. Dear students, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक नई प्रॉब्लम डिस्कस करने आया हूँ and this is problem from your IIT JEE PFQS means previous year question paper में से है, right? And dear students, already I have told you I am going to start my new batch from 1st April 2023, right? And the link given in the description line, you can go through that and fill the form, right? I will discuss each and everything in detail, and my courses will run from just from foundation, right? Foundation, main and advanced, right? And don't get scared or afraid that I will speak in English. Don't worry, I will use both language, Hindi and English. If you are comfortable with Hindi language, then I will make you understand with Hindi language. अगर आप हिंदी में समझना चाहे तो मैं हिंदी में समझाऊंगा. इफ़ यू वांट टू मेक अंडरस्टैंड इंग्लिश देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इंग्लिश. अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो मैं इंग्लिश समझाऊंगा. बट एनी वे आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. लेकिन किसी तरीके मैं आपको समझाऊंगा जब, राइट? जब तक आप समझना चाहते हैं तब तक. ओके, सो जस्ट ज्वाइन द कोर्स एंड एंजॉय विद द मैथमेटिक्स, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये फिर मैं प्रॉब्लम लेके आया हूँ. एंड अगेन आई एम सॉरी फॉर द डिले बिकॉज यू नो फ्रॉम फर्स्ट लास्ट वीक हमने कोई वीडियो अपलोड ड्यू टू हेल्थ इशूज. नाउ आई एम फाइन, सो आई विल कंटिन्यू विथ माई द लेक्चर सीरीज. ओके, सो नाउ दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, राइट? एंड आई कैन से दिस इज प्रॉब्लम फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, राइट? ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि IIT JEE NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी जो आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है IIT JEE का, वो उनको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, राइट? दे ऑलवेज पुट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक्स. सो बिफोर अपियरिंग टू एनी एग्जाम you have to just know the what the conducting agency thinking. कंडक्टिंग जो एजेंसी होती हैं जैसे UPSC, NTA, ये इनके जब एग्ज़ाम अपीयर करते हैं तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है. हम लोग गलती क्या करते हैं? हम लोग गलती ये करते हैं कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्या. बट दिस इज नॉट अ गुड वे, राइट, टू जज द थिंग्स. ओके, सो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम के साथ. देखिए प्रॉब्लम हमारे पास गिवन क्या है. गिवन हमारे पास tan विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस sec इनवर्स √5/2 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8. दिस इज प्रॉब्लम वी हैव टू सॉल्व, राइट? सबसे पहले हम क्या करेंगे? आई विल कन्वर्ट द होल एक्सप्रेशन दैट वी हैव इन फॉर्म ऑफ tan or tan inverse, right? So now in this case we have, first of all, we have in this expression sec inverse √5/2. We have to convert in the form of tan inverse. What is put here? Tan inverse, right? So again there is a simple means we will use here what? Pythagoras theorem. So we have to need in Pythagoras theorem, this says that hypotenuse square means h square equal to perpendicular square p square plus base square, that is p square, right? So in this case, you know very well, in case of cos, if you are taking cos, I am taking here any angle, say x, cos x is equal to what we have? We have base upon hypotenuse, right? Upon hypotenuse we have, right?
Now in this sec x, just take the reverse. Sec x h upon b. H upon b. So now we have to convert the sec inverse in form of tan inverse. So in case of what will be tan x? Tan x. Tan x is equal to, we have p upon a base, that is p, right? So we need in this, what we have in this case, this is under root 5. This is what? This is hypotenuse. So this put here, under root 5 square is equal to p square, means perpendicular square. How much we have? In perpendicular we have what? We have what? Question mark, that is nothing, so I am writing here p square. But we have b, base is 2, it is 2 square. So we have root 5, that is 5 minus 4 is equal to p square. So p is equal to what we have? Plus minus 1, right? But these are hypotenuse, base, these are what? Length, and length will never negative. So that is p equal to 1. We can't take p does not equal to, ये length कभी negative नहीं होती है. So now we have all the required information. We have hypotenuse, we have means kernel, we have base, that's Aadhar, we have lumb, that is perpendicular. We have all three entries. Now, so in case of tan inverse, we will be writing here what? P upon B, that is what? Means perpendicular, that is 1 upon base. Base is what? How much we have? That is 2. So this is, now this is converted for expression. So now the expression becomes tan of 2 tan inverse 1 upon 5 plus tan inverse 1 upon 2 plus 2 tan inverse 1 upon 8. Now this becomes. Now I will solve this problem, right? Just see. We have tan of, I am taking 2 common, right? We are writing here tan inverse from previous slide. We have 1 upon 5 and 1 upon 8. 1 upon 5 plus tan inverse plus tan inverse 1 upon 8. Now I am taking here first term and third term, plus we have tan inverse 1 upon 2, right? Now this is what? Tan of, this is tan inverse. Now I am using here tan inverse A plus tan inverse B. So this formula will be 2 times tan inverse, tan formula will क्या होगा? Tan inverse A, that is 1 upon 5 plus tan inverse B, that is 1 upon 8. Formula will be tan inverse A plus B, means 1 upon 5 plus 1 upon 8 upon 1 minus AB, that is 1 upon 5 into 1 upon 8. And this is we have plus tan inverse 1 upon 2, right? So this is what? Tan of 2. Now you can simplify this, make it simplify. This is tan inverse. Now take LCM. 8 plus 5 we have 13 upon 14, 40 upon
8 into 5, that is 40. 40 minus 1, that is 39. So we have 39 upon plus tan inverse 1 upon 2. Now I am writing here 2. Now you can simplify. This is tan inverse. आप ये कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? फर्स्ट देखिए, आपको इसका मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, अंदर अंदर का और बाहर बाहर का, मीन्स 40 इंटू 39 एंड आई एम राइटिंग 13 इंटू 40, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और अंदर अंदर का 40 इंटू 13, राइट, प्लस this is tan inverse 1 upon 2, right. So this is 40, 40 cancel, 13 1 is 13, 13 3 is 13. So we have tan 2 tan inverse 1 upon 3 plus tan inverse 1 upon 2. दिस इज अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट. अभी हम क्या करेंगे, हमको फार्मूला बताया 2 tan inverse a का, दैट इज tan inverse 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, राइट. सो अब हम ये यूज करेंगे. ओके ओके, सो लेट्स मी नेक्स्ट स्लाइड. वी हैव tan, now using tan inverse 2a 2 into 1 upon 3 upon 1 minus a square, that is 1 upon 3 का स्क्वायर प्लस tan inverse 1 upon 2, that is tan of tan inverse, this is 2 upon 3 upon, this is what 1 minus 1 upon 9, right, plus tan inverse 1 upon 2. So we have tan of tan inverse. Now just same, I think हम डन कर चुके हैं. 2 upon 3, this is 8 upon 9, right, plus जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स डिनोमिनेटर का एंड न्यूमरेटर, राइट. कैसे करेंगे, लेट मी टेल यू. tan और tan इनवर्स ऐसे, अब बाहर 2 इंटू 9, ये बाहर की एंट्री थी, अंदर की 3 इंटू 8 प्लस tan inverse 1 upon 2, right. So 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, right. So we have tan inverse 3 upon 4. Let me next in the side. We have tan of tan inverse 3 upon 4 plus tan inverse 1 upon 2, right. अगेन हम यहाँ यूज करेंगे tan inverse, हम यहाँ यूज करेंगे tan inverse a plus tan inverse b, that is tan inverse a, that is 3 upon 4 plus b, that is 1 upon 2 upon 1 minus a into b, that is we have. So this is tan of tan inverse. Now this is what, the take 4 LCM, I talk about in the numerator, right.
4 LCM is 3 plus how much we have? 4 LCM, that is 2. That is 2. Right? Upon 4 2 ja 8. 4 2 ja 8. 8 minus 3 5 upon 8. This is we have. Now I think you can do 10 inverse. This is what? 5 into 8 upon 4 into 5. Right? So 5 cancel, 4 1 ja 4, 4 2 ja 8. So and 10 also cancel. 10 let me tell you. 10 over 2. This is also cancel, you get 2. So this is the answer. Okay. Dear students, आपको कहीं भी कोई भी इशू आया हो, you can contact, you can reach out me, I will resolve your doubts. Sure, dear student, कैसा लगा दे क्वेश्चन आज का? इसमें कोई इशू हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. I will help you to solve this problem. Now, so आप stay healthy and be safe. I will again meet you with the next problem tomorrow. Right? Okay. So आप enjoy करिए, पढ़िए. Bye. Take care. God bless you all. Have a good day.